Hello students, in this series of handwritten notes which I will be providing throughout my videos on this channel, पहला टॉपिक है आपका एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये डिसरप्ट होता है तो ये ले जाता है एसिडोसिस या फिर एल्कलोसिस, एसिडोसिस या फिर एल्कलोसिस की कंडीशंस की तरफ। अब इनका डिस्कशन हम आगे के वीडियोस में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो एसिड बेस का बैलेंस होना ज़रूरी है फॉर द ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ ब्लड सेल्स, एंजाइम्स, ट्रांसपोर्ट सेल्स, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट्स और न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए, डीएनए। और इसके लिए ज़रूरी है आपका पीएच जो है वो नॉर्मल रेंज में फॉल करे, जैसे कि ब्लड का इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर का पीएच जो है वो एक ऑप्टिमम रेंज में होना चाहिए। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने लिख रखा है ये ब्लड का जो पीएच है वो 7.34 से 7.44 के बीच में रहना चाहिए। और इसके अलावा इंट्रासेल्यूलर पीएच लगभग इतना होना चाहिए। इसका डिस्ट्रप्शन ये आपका इन कंडीशंस की तरफ ले जाएगा। सबसे पहले समझते हैं पीएच क्या है। पीएच है नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब इसमें हम देखते हैं कि आपका एक न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होना चाहिए। ये लगभग 7 होना चाहिए। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि एक मतलब जो एक स्टैंडर्ड लिया जाता है वो ये है कि pH ऑफ 1 मोल ऑफ प्योर HCl विल बी 0 बिकॉज माइनस लॉग ऑफ 1 विल बी 0 एंड दिस इज़ ट्रू फॉर HCl। ऐसे ही NaOH जो कि एक जिसको बहुत मोस्ट कॉमन एल्कली सॉल्यूशन के रूप में हम लेते हैं, उसका होगा 14। So also water at 25 degrees centigrade, when the hydrogen ions in some solution are this much, and so the pH will be like this, and it would be around 7. So this is taken as the standard for calculation of acidic, whether the solution is acidic or it is alkaline. तो इसके लिए एक आपका ये सोरेनसन पीएच स्केल रहता है। इसकी वैल्यू जो रहती है वो 0 से 14 तक रहती है। तो इसमें जो मिड वैल्यू है, मिडिल मोस्ट वैल्यू, ये 7 ली जाती है। इससे अगर कम है तो एसिडिक हो जाएगा, इससे ज़्यादा है तो एल्कलाइन हो जाएगा। ऐसे ही गैस्ट्रिक जूस जो कि मेनली एसिडिक होता है, इसकी वैल्यू 1 से 3 के बीच में होती है। वेरी करती रहती है, बट एट द टाइम ऑफ फॉर द ऑप्टिमम डाइजेशन it should lie between 1 to 3. और ये है कुछ और सॉल्यूशंस की पीएच वैल्यू। नॉर्मल पीएच वैल्यू बाइल की 7.7, यूरिन की 4.8 to 8.0, एंड दिस इज़ फॉर सलाइवा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एसिड्स और बेसिस कितने तरह के होते हैं। ये मेनली जो इनका क्लासिफिकेशन है वो है स्ट्रॉन्ग होते हैं या तो वीक होते हैं। ठीक, अब इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस हो सकते हैं। वीक एसिड्स हो सकते हैं या फिर वीक बेसिस हो सकते हैं। इनके डिफरेंट एग्जांपल्स मैं बताऊंगी। अब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वो रहेगा जो ज़्यादा डिसोसिएट होगा टू गिव प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स देने के लिए ज़्यादा डिसोसिएट होने की कैपेबिलिटी जिसमें होगी, जैसे कि HNO3, HCl और आपका H2SO4। और ऐसे ही इसमें आपका जो आपका बेस रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, वो इसका ठीक वाइस वर्सा समझ लीजिए, ये कम डिसोसिएट करेगा। इसके एग्जाम्पल रहेंगे
आपका H2CO3 एंड CH3COOH। तो अब तक हमने जितना कुछ सीखा उसमें एक बेसिक चीज़ ये थी कि एसिड और बेस। एसिड वो था जो डोनेट करता था प्रोटॉन्स को, और बेस था जो एक्सेप्ट करता था। ये एक आपका बेसिक डिफरेंस था जिसे हम लेके चल रहे थे। अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम का नाम आता है जिसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें। तो ये आपका रहता है लगभग ये आपका होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू आपका जो भी एनायन है डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयंस एंड एनायंस। So for ionization reactions it is also called as ionization constant or dissociation constant। ionization और dissociation constant ये आपका बेसिकली इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, उस एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है। और ये ऐसा है कि एक एसिड स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा अगर ये ज़्यादा डिसोसिएट करता है प्रोटॉन्स को देने के लिए, और वीक एसिड वाइस वर्सा हो जाएगा, कम प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा। सो इसमें सीधी सी चीज़ ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी और वीक एसिड की जो है कम होगी। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। एंड तो इसकी आपकी एक बात की बात ये निकल के सामने आ गई कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा और लेकिन उसका पीएच जो है वो लो रहेगा, और pKa वैल्यू भी लो रहेगी। सिमिलरली अ वीक एसिड विल हैव रिलेटिवली लो Ka और डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसकी पीएच जो है वो हायर रेंज में रहेगा, और सिमिलरली pKa वैल्यू विल बी हायर देन द स्ट्रॉन्ग एसिड। सो लेट्स गेट टू द बेस। Here we are seeing this equation. Here in ammonia one hydrogen ion is added to produce NH4 plus ion. So here we are seeing that bases are proton acceptors, and so let's get to the next important part, which is buffer. Buffer is that solution which resists changes in pH of any kind. Change in pH, it will resist it. So that is the basic definition of a buffer. Buffer is a solution which resists change in pH. So now coming to the scientific terms, the gram of acid or alkali required to change 1 unit of 1 liter buffer solution is known as buffering capacity of that solution. So you need to keep that in mind. ठीक, अब इसमें जितना एसिड और एल्कली जिसकी ज़रूरत पड़ेगी 1 यूनिट ऑफ 1 लीटर बफर के सॉल्यूशन को चेंज करने के लिए, इसको हम बफरिंग कैपेसिटी बोलेंगे उस सॉल्यूशन की। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है एल्कली रिज़र्व। व्हाट इज़ एल्कली रिज़र्व? दैट विल एल्कली रिज़र्व सबसे पहले एक्शन में आएगा, बिकॉज हम ना बफर को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट विल कम इन टू प्ले इफ़ देयर इज़ एनी थ्रेट फॉर द सिस्टम टू डिसरप्ट। मतलब कि अगर एल्कलोसिस की तरफ जा रहा है पीएच, या फिर एल्कलोसिस की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले यही जो होते हैं आपके, यही मोशन में आते हैं, यही सबसे पहले आके डिफेंस करते हैं। तो उसमें एक रहता है एल्कली रिज़र्व। इसमें बाइकार्बोनेट आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज़ नॉर्मली 24 मिलीमोल्स पर लीटर। इट विल ओवरकम एसिड्स, जो एक्स्ट्रा एसिड बनेंगे उनको ओवरकम करेगा। सो दैट विल कम इन टू प्ले वेरी क्विकली।
और मेन चीज़ ये है कि ये जो जितने भी रिज़र्व रहते हैं या बफर ही कह लीजिए, बफरिंग जो होती है ये आपका न्यूट्रलाइज करता है, उस सिचुएशन को करेक्ट नहीं करता, केवल उस पीएच को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट टू द रूट ऑफ द कॉज. Now, what is conjugate base? It is basically the anion produced on dissociation of an acid. So, स्ट्रॉन्ग एसिड इसके बारे में मैं पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ. स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइज करेगा, जैसे कि HCl होता है, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है H+ और क्लोराइड आयन में. एसिडिक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये वीक होता है और कम से कम ये इतना आयोनाइज नहीं होता है. अब एक टर्म आता है पॉलीप्रोटिक एसिड. ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए. ये कुछ टर्म्स हैं जिनका अगर आप मेंशन करते हैं देन एग्जामिनर will think that yes, you have the knowledge. Polyprotic acid it gives more than one proton, like carbonic acid and phosphoric acid. And bases, now let's come back to the bases. These are proton acceptors and these are few examples. So coming back to the buffers, these terms are mentioned again and again so that you can keep them in mind to gain further knowledge, like how the buffer system works. So you know it already. This CH3COOH plus CH3COONA, this is acetate buffer, and this is carbonate bicarbonate buffer. दिस इज़ फॉस्फेट बफर. फिर आपको कुछ नाम जो है वो पता होने चाहिए कि क्या क्या नाम हैं इन बफर्स के जो कि बॉडी में एक्ट करते हैं सबसे पहले. अब आते हैं मैकेनिज़्म कि आखिर बफरिंग मैकेनिज़्म किस तरह एक्ट करती है. तो ये होता है आपका सॉल्ट और एसिड का रेशियो. नॉर्मली ये 1/1 रहता है. सो अगर ये थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाएगा तो फिर आपका जो है पीएच भी गड़बड़ा जाएगा. अब जैसे ये एसिडिक एसिड और NaOH का रिएक्शन है, ये आपका इसमें दिखाया गया है कि ये किस तरह से आपकी मैकेनिज़्म काम कर रही है. अब इसमें जब ये रिएक्शन हुआ तो ये आपके बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए. अब इससे हुआ क्या कि ये न्यूट्रलाइज हुआ और ये आपके आयन बने जिसने फर्दर H2O बनाया और जो कि फर्दर एक्ट करेगा आपकी एल्कलोसिस या एसिडोसिस को बैक टू नॉर्मल ले जाने के लिए. अब इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, ये है हेंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन. ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको ज़रूर पूछा जाता है, चाहे आपका सेशनल टेस्ट हो या मेन आपका प्रॉफ हो, उसमें ये ज़रूर पूछा जाएगा. Okay, so next topic is Henderson-Hasselbalch equation. Now what this equation tells you about? This equation is nothing but it will demonstrate the relationship between pH and pKa along with the concentration of base and acid. So here we are seeing this equation which is demonstrating the relationship between pH and pKa of a solution or bodily fluid plus log of concentration of base and divided by concentration of acid. Here the base is taken to be bicarbonate ions and acid is taken to be H2CO3. So the numerator is bicarbonate ions and acid is H2CO3. Now this component here
is regulated by metabolic control, and it is controlled by respiration. So now if we talk about the most important buffer in our body, that is bicarbonate buffer. So pKa value is taken to be 6.1 plus log of concentration of base, that is 24, divided by concentration of H2CO3. Now this will come out to be approximately 1.3, and on summing it up, it will come out to be 7.4, which is the normal pH of a human body. So that was the basic thing about the Henderson-Hasselbalch equation. It is very important from the exam's point of view. It is also asked frequently in your competitive exams. So we can take notes that for any buffer, its pKa value is constant at a given temperature. So it will the equation will tell you about the approximate pH. Now, how the regulation of acid-base balance occurs. Most important mechanisms are buffers, first line of defense, second is by respiration or pulmonary, and third is via renal mechanisms. So let's talk about buffers. So 60% of these are intracellular and 40% are extracellular, and out of these are the most important buffers: H2CO3 and HCO minus ratio, and phosphate buffer, hemoglobin, and proteins. So why bicarbonate buffer is the most important buffer? Because its concentration is the highest in the body. It's around 24 milliequivalents per liter. So this is taken to be the first line of defense. और फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन जो होता है वो H2CO3 एंड HCO3 माइनस का दोनों का जो रेगुलेशन है वो डिटरमिन करता है दैट हाउ द सिचुएशन विल कम आउट, वेदर इट like if it is alkalosis, then it will tend to work towards increasing acids concentration, and vice versa. So until now we have established that the pH of plasma normally it is 7.4. It operates in a very narrow range of this 7.38 to 7.42, and we have also learned that the most important buffer, it is a bicarbonate buffer. It is also called most important extracellular buffer. So what is the most important intracellular buffer? It is the phosphate buffer, which operates through the phosphoric acid. H3PO4. So through this it operates, and so in the body, or we can say intracellularly, Na2HPO4 and NaH2PO4 are the most effective buffers.
And next is protein buffer system. So the buffering capacity of protein depends on the pK value of ionizable side chains. So it is most important of them is histidine. It has because of its imidazole group. Imidazole group, it acts as the very important or very strong protein buffer. And another is hemoglobin buffer. It is also effective because of histidine and production of HbO2. Its pK value is also around 6.1. So next we are coming to the respiratory regulation of pH. Now it happens through different mechanisms. First of them is the regulation of rate of ventilation. It occurs through the chemoreceptors, which are present throughout the arterial system, uh, and it basically regulates the partial pressure of CO2. Like increase in partial pressure of CO2 will lead to a decrease in pH. So respiratory regulation is basically the second line of defense. And also I told you that the partial pressure of CO2 acts as the major contributor in controlling or regulating the acid base balance. And it is also regulated by hyperventilation and hypoventilation. So whenever there is fall in pH, then the acidosis will result, and the respiratory rate will be stimulated, and it will cause hyperventilation, and therefore the more amount of CO2 will be eliminated, and it will lower the it will lower the आपका H2CO3 levels. So acid कम हो गया, therefore it will lead to alkalosis and acidosis will be decreased. Now what is the action of hemoglobin? It basically transports the CO2, like जैसे बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, ओके, एंड CO2 रिलीज़ करते हैं. सो this CO2 is then taken up to the lungs where it is eliminated. सांस के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू इट इज़ एलिमिनेट इसको किया जाता है. सो दिस एक्शन इज़ एडेड बाय हीमोग्लोबिन and it acts in the presence of carbonic anhydrase. It is an important enzyme. And H2CO3 here, it gives H2O and CO2, and these ions further result in hydroxy HHB production, and the activity of carbonic anhydrase increases in acidosis and decreases with decrease in H plus concentration. So what I said is that the activity, now this activity will, what will happen, it will increase in acidosis and decrease in alkalosis. What happens during oxygenation, or we can say in the lungs? लंग्स में हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मीन्स ऑक्सीजन इज़ एडेड टू इट.
and it carries it to the different cells. So what happens is that bicarbonate enters the RBCs by reversal of chloride shift. So what happens is that this HHB combines with oxygen to give HbO2 and releases one hydrogen ion. And then bicarbonate ion comes into play. It combines with this H plus and gives H2CO3. It is acidic in nature. And this H2CO3 further gives H2O and CO2. So this is how the uh, acid base balance is maintained during the oxygenation process. Now next, coming to the renal regulation. Renal regulation is done by kidneys. Human body has 2 kidneys, and it regulates the pH of the extracellular fluid and now what happens is that there is basically acidification of urine. Now we know that the pH of urine can vary in a very wide range. It is around 4.3 to 9.8. This is the pH of urine. And also it depends on the amount of acid excreted. Now we are going to discuss the major renal mechanisms for regulation of pH. First is excretion of hydrogen ions. It happens in the proximal tubules. ओके सो ये जो सेल्स हैं ये किडनी में रहती हैं, और ये जो मेजर जो एक्सक्रीशन जो हो रहा है वो हो रहा है आपका पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में. सो वी विल सी हाउ दिस हैपन्स. फर्स्ट what is the concentration of filtered bicarbonate in the tubular fluid? Okay, so it is around 4500 millimoles per day. I should have written it here. Now this amount is completely reabsorbed into blood. Okay, so urine becomes bicarbonate free, and the pH of urine is around less than 6 or less than 6.5. So the renal tubular cells have sodium hydrogen exchanger system. Sodium hydrogen exchanger system, and it is an antipode system present at the apical membrane. Okay, so now when sodium enters the cell, hydrogen ions from the cell are secreted into the luminal fluid. Now, but this process does not work alone. It starts with the combination of CO2 plus H2O, and for this CO2 has to diffuse into the cell, and under the catalytic action of carbonic anhydrase it has to combine with the H2O to form H2CO3. And
this happens. So this hydrogen ion is exchanged and these are excreted. This HCO3 minus or bicarbonate ions are released or turned into the plasma, and alkali is recovered. So this is the process that happens through the excretion of H plus ions. Next is excretion of bicarbonate ions. It is not excretion, it is basically reabsorption. So this is basically to save the base, and the excretion of H plus ions is negligible. So what happens is that the sodium ions are exchanged from tubular lumen to PCT and to plasma. After that, H2O plus CO2 combine as usual, that was happening earlier. H2CO3 is formed, which is divided or which gives bicarbonate ions and hydrogen ions. It goes to the tubular lumen. Now what happens is that the hydrogen ions secreted into the lumen, they are required for the reabsorption of filtered bicarbonate. So they both combine and they form H2CO3, and it is formed in the tubular lumen, and it is further passed down to the tubular cell. So what happens is that urine is normally bicarbonate free, so the bicarbonate combines with the H plus in the lumen, and it gives H2CO3, which is broken down to CO2 and H2O, and or we can say it dissociates into CO2 and H2O, and the CO2 diffuses into the cell, which again combines with water to form the H2CO3 or carbonic acid in the cell. It again ionizes to H plus. So which is secreted into the lumen in exchange for sodium ions. So there is no net excretion of H plus or ions or generation of new bicarbonate. The net effect of these processes is the reabsorption of filtered bicarbonate. So it happens through the sodium hydrogen exchanger. So SCO3 bicarbonate ions are preserved. So this is the process by which reabsorption of bicarbonate ions occurs. Now excretion of H plus ions as titrable acid. Now what happens is that hydrogen ions are secreted by. Now first of all, let's understand what is the titrable acid. Titrable acid is excreted here to restore the balance of acids and bases. Now it is occurring through the
phosphate balance, and the acid and basic phosphate buffer is considered the urinary buffer. All right, so what is the titrable? It is NaH2PO4, which is being excreted here. Now Na2HPO4, it gives sodium plus NaHPO4 minus ions in the tubular lumen, and this NaHPO4 minus ion, it combines with the H plus ions, which are excreted through the action of the carbonic anhydrase, which gives H2CO3, which dissociates into H plus ions and bicarbonate ions. Like other methods, it also goes into the plasma, and what happening is here that this NaH2PO4 is being excreted. Now why is this happening? Because the major acid present, the titrable acid which is present in the urine, it is the sodium acid phosphate, and as the tubular fluid passes down the renal tubules, so more H plus ions are secreted into the luminal fluid, so that the pH of urine falls, and the process it starts in the proximal tubule itself, so and it goes up to the distal tubules. Now if you have studied physiology and anatomy, then you must be knowing what are proximal tubules and what are distal tubules, and because of this exchange that is occurring between tubular cell and tubular lumen, that is of sodium and hydrogen ions, it the Na2HPO4, it is the basic component or basic phosphate component. It is converted to NaH2PO4, and the pH of the tubular fluid falls. So it basically regulates the phosphate balance, and the maximum limit of acidification is taken to be 4.5. The last mechanism is through the excretion of ammonium ions. Now why is this mechanism necessary? Because the previous three mechanisms are not sufficient to replenish the alkali reserve. So the formation of new ions of bicarbonate ions and excretion of ammonium ions is essential to maintain the acid base balance, and this basically helps to excrete H plus and reabsorb bicarbonate ions. So what happens is that it occurs through the glutaminase system, which is present in the tubular cells. Now what happens is that
glutamine present in tubular cells, it gives glutamic acid, and in this process it releases ammonia, which is transported to tubular lumen, and sodium hydrogen exchanger is active as usual, and also the other mechanisms like combination of the CO2 and HO2 forming H2CO3 is also underway. Now all these ions like H plus and NH3, they form ammonium ions, and so it basically traps the hydrogen ions which is excreted through the urine, and also it doesn't make urine very acidic. So but this ammonium ion can also be reabsorbed by sodium, potassium and chloride symporter, where the potassium is replaced by or substituted by NH4 plus ions. Now these ammonium ions, they reach liver and help in ureagenesis. Now normally about 70 milli equivalent per liter of acid is excreted daily, but in conditions of acidosis it can rise up to 400. So it also leads to an enhanced activity of glutaminase and enhanced excretion of ammonium ions, and also it is considered very strong system to eliminate acid.